गुड मॉर्निंग एवरीवन और वेलकम टू मैथ्स ओडिया। तो मु आशा करूची पिला माने तम माने समस्त भले थिबो। तो नेक्स्ट क्लास रे मु तम मानकु फोटोसिंथेसिस विषय डिस्कशन करैथिली। फोटोसिंथेसिस विषय रे किछि बेसिक आईडिया मु तम मानकु देइथिली। आ ता सहित आमे माने डिफरेंट लाइट रो वेवलेंथ विषय रे मध्ये पढिथिले। ता सहित फोटोसिंथेसिस केमति होउची से विषय भी आमे माने डिस्कशन करथिले। आज टिके आमे माने भले से डिस्कशन करिया फोटोसिंथेसिस ऊपर। तो फोटोसिंथेसिस रे पिले आज हम माने लाइट रिएक्शन ऊपर पढुचंती। तो लाइट रिएक्शन ऊपर मु तम माने किछि बेसिक इंपोर्टेंट जिंस कहि देबी। लाइट रिएक्शन तो लाइट रिएक्शन पिले कोन आलोक प्रक्रिया जोटी लाइट रो उपस्थिति थिबो, जोटी आलोक रो उपस्थिति थिबो। फोटोसिंथेसिस हम माने आलोक श्लेषण मींस लाइट रो ही फोटो, फोटो मींस लाइट, लाइट रो ही किछि गोटे जिंस कोन होउची ना प्लांट ताकू कैप्चर करि नै जाउची एवं तमरो कोन फिजिकल इनऑर्गेनिक फॉर्म को ऑर्गेनिक फॉर्म रे कन्वर्ट करे दोचे। सोलर एनर्जी रा तमरो कन्वर्टेड हे जाउची केमिकल एनर्जी। तो आज रही जो लाइट रिएक्शन ने आमे माने किछि बेसिक इंपोर्टेंस थि लाइट रिएक्शन नो। अच्छा, तो लाइट रिएक्शन को पिले मन रखि थाओ। लाइट रिएक्शन को अदरवाइज हिल्स रिएक्शन बोली कुआ जायते, काहे ना ये हिल्स ही डिस्कवर करथिले आको, सेति में लाइट रिएक्शन को हिल्स रिएक्शन बोली कुआ जाई थाए। तो एक्चुअली लाइट रिएक्शन ने होउची कोन, काहे कि हमें आको लाइट रिएक्शन बोली कहउछन। तो पिले देखो, the light reaction needs light to produce organic energy। एठी कोन होउची ना प्लांट, प्लांट कोन करूची ना लाइट रिएक्शन एथि पई तमरो पिले होउची जा कि ऑर्गेनिक एनर्जी प्रोडक्शन करिवो। लाइट रो आवश्यक बा लाइट रो सहाय्य रे ये कोन करूची ना ऑर्गेनिक एनर्जी प्रोडक्शन करूचे। मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स तमर जेमति एठी कोन ना एटीपी आउ एनएडीपीएच। एटीपी आउ किए ना एनएडीपीएच, ATP and NADPH which are initiated mainly by the green color pigment chloroplast। अब एटा होउची कोउठी पिले या आरंभ कोउठी होउची लाइट रिएक्शन ना तमरो ग्रीन क्लोरोप्लास्ट रे। तो लाइट रिएक्शन गोटे फोटोकेमिकल प्रोसेस पिले। को प्रकार फोटोकेमिकल्स माने केमिकल प्रोसेस हबो, रासायनिक प्रक्रिया हबो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। माने आलोकर उपस्थिति रे गोटे प्रकार रासायनिक प्रक्रिया होइता है। सेते लाइट रिएक्शन को कहला एटी कोन ना फोटोकेमिकल फेज। The process include light absorbing, जो थरे कोन होची ना लाइट रो शोषण माने लाइट को शोषी नै जाउची, प्लांट अब्जॉर्ब करि नै जाउची। तापर कोन वाटर स्प्लिटिंग, वाटर मॉलिक्यूल भांगुची, विखंडन होची, ऑक्सीजन रिलीज, अम्लजान तमरो कोन होची निर्गत होची, एंड the formation of high energy chemical intermediates that is ATP and NADPH2। ATP adenosine triphosphate, ये निकोटिनामाइड adenine डाइफॉस्फो हाइड्रोजन। तो सेवरल कॉम्प्लेक्स आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। बहुत सारा कॉम्प्लेक्स तमरे लाइट रिएक्शन ने मध्ये रही छै। द लाइट अब्सॉर्बिंग पिगमेंट आर लोकेटेड इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। हमें माने समस्त जानि छै जो ऑर्गन बा जो पार्ट जे कि लाइट की अब्सॉर्ब करिवो से कोड अछि पिले ना थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ने रही छै। कोड रही छै पिले ना थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ने रही छै। सेम से कहूची कोन ना स्ट्रोमा लामेला लैक NADP reductase and PH2 and the outer wall and margins of end of the thylakoid of the grana present non appressed region and for remaining grana thylakoid membrane present appressed region। तो ता काय कथा हला कोन पिले ना जो स्ट्रोमा रो जो लामेला रही छै, ग्राना दीटा ग्राना परस्पर भीतर जॉइन हेते मु तब सब देखिबी तुम मन कहला। तो से जगह रे ही कोन ला लैक परिमाण NADPH reductase थाए and PS2 photosystem 2 मध्ये रही थाए। But the outer walls and the margin of the end of the thylakoids or grana represent non-appressed regions and the remaining grana thylakoid membrane represent the appressed regions। माने एठी तमर कोन ना end of the thylakoid CAT माने देखो ये बहुत कम परिमाण रे रही छै। बट एठी तमर कोन माने जो thylakoid membrane जो छै ग्राना रो सेठी तमर अधिक परिमाण रो रही छै। There are protein complex in the thylakoid membrane to which the pigment molecules are attached। सेतर बहुत सारा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स रही छै उतरे पिगमेंटेड कोन है छी ना अटैच है की रही छै। देन तापर पिले आसला कोन ना व्हाट इज लाइट रिएक्शन। एटी म त माने गोटे बेसिक इंट्रोडक्शन दउतली। एठी हमें लाइट रिएक्शन को डिस्क्राइब करूचंदी। तो लाइट रिएक्शन होची गोटे फोटोकेमिकल प्रोसेस जोटी लाइट रो प्रेजेंस रे तमरो केमिकल रिएक्शन होची। आउ कोन पिले इंक्लूड लाइट एब्जॉर्प्शन। ये एठी कोन करछि ना लाइट ता तमरो एब्जॉर्ब होची, वाटर ए सब जांक होची पिले।
several protein complexes are involved in the process से जो protein गुडी का कौन पिले ताको हमें देखिबा जेमिति कि लाइट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस रहिछन जेमिति एलएससी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एंड सेटा हला कोन फोटो सिस्टम 1 आउ हला फोटो सिस्टम 2 कि तमरा डिफरेंट डिफरेंट टाइप रो फोटोफॉस्फोराइलेशन साइकिल रे तमनकर यूज हबो The LSC are made up of hundreds of pigment molecules bound to the proteins. The light harvesting complex जो रही से बहुत सारा hundreds of pigment molecules जोटा सब protein सहित bound है कि रही Each photosystem has all the pigments. प्रत्येक photosystem करो सब प्रकार pigment रही except one molecule of chlorophyll A. Forming a light harvest system is called as antenna जे तमरो light harvesting system रो formation करोची ताको हमें कहउछन कोन ना antenna this pigment help to make photosynthesis more efficient by absorbing different wavelength of light ये कोन करूची ना सूर्य को तो आसुवा different wavelength रे जो लाइट आसी कारण हमें मन जानछे व्हाइट लाइट तमरो सनलाइट तमरो कन्वर्ट हो जाय सातुटा कलर को तो से जो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ रो जो सब कलर आछी ये ताको सब कोन करजन ना अब्सॉर्ब करी नै जाउछन से एंटीना मॉलिक्यूल्स the single chlorophyll a molecule from the reaction center the single ये सब कोड थांती ना reaction center रे रही थांती the reaction center is different in both photosystem एवं दीटा जो photosystem हमर थाए photosystem 1 photosystem 2 ए दीटा करे तमरो कोन ना एठी तमरो chlorophyll molecule कोन हेता ना अलगा अलगा रही थाए in photosystem 1 the reaction center chlorophyll A has an absorption peak at 709 700 nanometers hence is called as P700 or while in photosystem 2 it has absorption maximum at 680 nanometers and is called as P680 तो पिले एठी देखो पिले photosystem 1 टा कोन तार सबुठारु अधिक परिमाण रो लाइट absorption कोउठ हेताय ना 700 रे 700 रे तार अधिक परिमाण रो लाइट absorption हेताय सेतेन ताकू सेते जो क्लोरोफिल ए टा को जाय कोन ना P700 बा photosystem 700 जोठी तमरो अधिक परिमाण रो लाइट रा absorption होइताय जे हम सेमति देखिबा ताले पी फोटोसिस्टम 2 रे P680 रे बा 8680 absorption तार अधिक होइताय अच्छा तापर आसिला कोन हला लाइट absorption तो लाइट absorption पिले कोन लाइट absorption का द्वारा नै की होइताय the photosynthetic pigments such as chlorophyll A chlorophyll B carotenoids अच्छा को दिन से पिले chlorophyll A, chlorophyll B, and carotenoids are the light harvesting molecule found in the thylakoid membrane of the chloroplast. एमान होजन कोन ना light harvesting molecule thylakoid membrane of the chloroplast. As mentioned above, pigments are organized along with the protein into complex is called as photosystems. तो हमें एटी photosystems काहा बोली कहउजंती ना ए जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप रो सब photosynthetic pigment रहउजंती से माने समस्त कोन गोटे प्रोटीन मॉलिक्यूल सहित समस्त वेल ऑर्गेनाइज हेतिबे सेटा को हमें कहउछन्ती कोन ना फोटो सिस्टम्स ईच फोटो सिस्टम हैज ए लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सब फोटो सिस्टम रे गोटे लाइट हार्वेस्टिंग कंटेंट दैट कंटेंट प्रोटीन जोतिर 300 रु 400 क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट सब रहित जो सब सन कतुर आसुवा लाइट को अब्सॉर्ब करि नै जाउतिबे व्हेन ए पिगमेंट अब्सॉर्ब ए फोटोन इट इज राइज टू एन एक्साइटेड स्टेट जेतेबेले गोटे पिगमेंट जेतले सन कतुरु आसुतिबा जो सोलर लाइट को जेतेबेले कारण सन कतुरु जो सोलर लाइट आसे से फोटोन आकार ही आसीता है तो ये अब्सॉर्ब करि नै जे सेतले से ग्राउंड स्टेट रु एक्साइटेड स्टेट को चली जाई थाय जा पर से गोटे इलेक्ट्रॉन कोन करे ना बूस्टेड करे टू द हायर एनर्जी ऑर्बिटल एटी तापर आसिला पिले कोन ना रेड ड्रॉप एंड इमर्शन इफेक्ट काहे कि तमरो रेड कलर रे अधिक परिमाण रो एब्जॉर्प्शन होउची कोन पाई रेड कलर तमरो प्लांट मानक पाई अति आवश्यक आ रेड धिरे काहे कि एते परिमाण रो एब्जॉर्प्शन होउची ता विषय हमें माने एठी डिस्कशन करिबा अच्छा इमर्शन and his co-worker exposed chlorella plants to only one wavelength of light at a time and measure the quantum yield such light with one wavelength is called as monochromatic light तो एठी देखो पिले तम मानन को गोटे जिंस बुझिबार अछि मोनोक्रोमैटिक लाइट कोन व्हाट इज मोनोक्रोमैटिक लाइट तो मोनो मींस गोटे क्रोमा मींस तमर हला कलर बुझे गोटे कलर वाला लाइट मोनोक्रोमैटिक लाइट
एठी आमे जानिचे कोन ना व्हाइट लाइट जो थाए जेतले से प्रिज्म को जाए व्हाइट लाइट टा जेतले प्रिज्म माध्यम रे देकी पास करे तमे माने समस्त 10th रे पढिथिबो से कोन करे ना तमरो सातुटा कलर को विच्छुरण हो जाए सातुटा कलर को पिले विच्छुरण हो जाए तो ये जो सातुटा कलर से कौन कले से सातुटा कलर गोटे कलर को यूज कर गोटे कलर को पकाउछंती सेति पय से एटा कहउछंती कोन ना मोनोक्रोमैटिक लाइट तो इमर्सन एटी कौन कले क्लोरेला प्लांट को नेले नै की कौन करे ना गोटे वेवलेंथ रो लाइट ता ऊपर पकेइले आउ से मेजर कले केते परिमाण रो से कौन करूजी ना सेठी क्वांटम यील्ड माने से सेठी ऑक्सीजन को मापिते माने केते परिमाण रो ऑक्सीजन सेठी निर्गत होउची गोटे माने जेति परिमाण रो ऑक्सीजन निर्गत ता मींस कोन सेठी सेति परिमाण रो कार्बन डाइऑक्साइड यूज हे कि तमर ग्लूकोज तयारी होउतो कारण हमर ऑक्सीजन ता होउची बाय प्रोडक्ट ना फोटोसिंथेसिस रो ऑक्सीजन होउची बाय प्रोडक्ट he plotted a graph of the quantum yield in terms of oxygen evolution देखो से कथा ही लिखिला एटी ऑक्सीजन नो इवोल्यूशन होउची at various wavelength of visible light रो जो डिफरेंट वेवलेंथ अछि जो डिफरेंट कलर अछि तो से कलर को सब यूज करी कि कोन कले ना डिफरेंट टाइप रो कोन करेले ना डिफरेंट टाइप रो क्रोमैटिक लाइट बा कलर वाला लाइट को नेकी बा डिफरेंट वेवलेंथ को नेकी से कोन करेना से क्लोरेला ऊपर पकेले प्रत्येक लाइट रे पड़ी साइला पर केते परिमाण रो ऑक्सीजन से रिलीज होउची ताकू से कोन करेना मेजर करी कि गोटे ग्राफ टाणीले he made this study to determine the wavelength of the visible light से या फळे कोन कले ना visible light रो wavelength मध्ये डिटरमाइन करि पारी थिले furthermore he made this study to determine the wavelength at which the photochemical yield of oxygen was maximum से कोन करथिले ना जते बळे से ए सब दिन से डिटरमाइन कले डिफरेंट टाइप रो wavelength को तो देखिले को वेवलेंथ रे तमरो जो फोटोकेमिकल यील्ड आस्तिला बा जो ऑक्सीजन आस्तिला मैक्सिमम रहितिला the yield was almost constant in the region of 600 to 680 nanometers बस देखिले कोन से यील्ड ता केवल गोटिए जगह रे ही कांस्टेंट रहउतिला जोटा की थिला तमरो कोन ना 600 रु 680 नैनोमीटर जाका में रेड रीजन बोली कहउचंदी तो माने एटा देखि परथिबो ए देखो एई रीजन ने तमन देखु तो एटी कांस्टेंट थिला दीटा कोन थिला पिले ना कांस्टेंट थिला दे फॉल इन फोटोसिंथेटिक यील्ड बियॉन्ड द रेड रीजन जते बळे से ग्राफ ता रेड रीजन कति आस्ते सेते बळे सेटा कोन होतला ना फॉल हो जाउतला कोन होतला पिले ना फॉल होई जाउतला हैला फॉल हो जाउतला तो सेति पई से कहउतिले कोन ना को रेड ड्रॉप बोली कहउतिले और इमर्सन इफेक्ट बोली कहवाला रेड ड्रॉप माने तले से जो ग्राफ ता तमर रेड कलर कति आसुतिला सेति कोन होतला तमर सेटा तळु को खसी आसु थिला अच्छा दिस इज आसिड ड्यू टू द नॉन फंक्शनल फोटोसिस्टम 2 एटा कहा पई होउतला पिले नॉन फंक्शनल फोटोसिस्टम 2 पई होउतला एमर्सन एंड हिज को-वर्कर मॉडिफाई द प्रीवियस एक्सपेरिमेंट बाय सप्लाइंग शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट रेड लाइट along with the longer wavelength of the light or far red light सेठी दी प्रकार लाइट पुनी अगेन आउथर देले गोटे देले से रेड लाइट देले तापर आ गोटे देले कोन ना फार रेड लाइट गोटे रेड लाइट देले आ गोटे हला फार रेड लाइट देले तो देखिले कोन ना दे फाउंड दैट द मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ द लॉन्गर वेवलेंथ हला फार रेड लाइट हला लॉन्गर वेवलेंथ होची कार ना फार रेड लाइट supplemented with a shorter wavelength of red light enhance the photosynthetic yield in comparison to sum of yield when two photosynthesis operate independently तो एठी कोन हैला जते बेले से अलग जते तमर फार रेड लाइट आ रेड लाइट को नेकी पकेइले क्लोरेला पले से देखिले जत्ती की परिमाण रो यील्ड आसुतिला जते से दीटा को एका संगे पकोदले सेते बेले से ग्राफटा अधिक ऊपर को पळेला माने सेटा फोटोसिंथेसिस रेट टाको बढ़ई देला तुम माने एटी देखि परदिबो जते से फार रेड पकेइले तो तमरो फोटोसिंथेटिक यील्ड एतिक आसिला जते बेले से रेड लाइट पकेइले जते फोटोसिंथेटिक यील्ड तमरो एतिक आसिला जते बेले एटी कोन बोथ लाइट टाको एका संगे पकेइले सेते देखो तुम माने फोटोसिंथेसिस यील्ड पूरा हाई आसिला बुझि परछ कि दिस लीड टू द कांसेप्ट ऑफ द टू फोटो सिस्टम
This enhance of the photosynthetic yield is refers to as immersion enhancement effect or immersion second effect बोलिया को कुआ जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट ये जो फोटो सिस्टम मानकर कॉन्सेप्ट सेठी कौन कहला ना ए एनहांसमेंट हवा द्वारा कौन होउची ना फोटोसिंथेटिक यील्ड तमरो कौन होउची ना बढ़ी जाउची जेहेतु दीटांग लाइट तमर पडुची कारण आमे माने देखिले कोन रेड लाइट रे ही अधिक परिमाण रो फोटोसिंथेसिस होइता है जेतेबेले तमर एठी कोन होउची ना लाइट तमर एते बढ़ी जाउची ए लाइट जेतेबेले तमर एठी बढ़ी जाउची तो एठी कोन होउची ना से ग्राफ टा अधिक आसी माने अधिक ऑक्सीजन रो परिमाण आसुची बा अधिक फोटोसिंथेसिस होउची तो एठी एनहांस होउची दीटांग लाइट पडला बेलु एठी फोटोसिंथेसिस रो रेट टा एनहांस हेई जाउची सेति पे आकु गला कोन ना इमर्शन एनहांसमेंट इफेक्ट और immersion second effect बोली कुआ गला the number of photon required to release one molecules of oxygen during photosynthesis is called as quantum requirement माने 8 क्वांटा मन रखि था 8टा क्वांटम और क्वांटा required to release one molecules of oxygen means 8टा लाइट एनर्जी दरकार गोटे ऑक्सीजन को रिलीज करिया पई माने कार्बन फोटोसिंथेसिस जो बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ताको गोटे रिलीज करिया पई हमको 8टी लाइट रो आवश्यकता अछि 8टी क्वांटम लाइट रो आवश्यकता रहिछि द नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज पर फोटोन इन फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड क्वांटम यील्ड तो हमें क्वांटम यील्ड काहू कहबा पिले केते मॉलिक्यूल तम रिलीज हला पर फोटोन ने 8टी क्वांटम रा आवश्यकता अछि बट गोटिए ऑक्सीजन पई केतोटी क्वांटम रो यूज हला 8टी क्वांटम रो यूज हला तो एठी हला कोन वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज पर 8 फोटोन ऑफ लाइट अब्जॉर्ब हेंस द क्वांटम यील्ड इज 1/8 दैट इज इक्वल टू 0.025 तो क्वांटम यील्ड केते पिले ना 0.025 तो गोटिए ऑक्सीजन रिलीज होबा पई हमकु 0.025 रो फोटोन आवश्यकता रही माने लाइट को अब्जॉर्ब करी नबार आवश्यकता रही तो पिले आज एति तो नेक्स्ट क्लास रे मु तुम मानक फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन फोटोफॉस्फोराइलेशन ए विषय डिस्कशंस करेबी केमिति तुम मान देखिबो एटीपी रो रिलीज होउची केमिति तमर एनएडीपीएस रो रिलीज होउची आउ तमर केमिति साइक्लिंग रे फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दीटा यूज होउचंती नॉन साइक्लिक सॉरी साइक्लिक रे केवल फोटो सिस्टम 1 और नॉन साइक्लिक रे दीटा तमर यूज हेतांती तो तमे ए सब दिन विषय हम नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन करिबा तो आज पई एति की आशा करछि तुम मानको ए क्लास बुझी आस्तिबो बा बुझिथिबो जहां भी तुम मानकर डाउट रहउछि तुम माने कमेंट करि परिबो तो आज पई एति की नेक्स्ट क्लास रे पुनथरे देखा आपा से पर्यंत पई समस्त को धन्यवाद समस्त भलो रे रहो थैंक यू।